The topic of discussion is atomic structure, and the subtopic is electronic configuration. Let's learn about electronic configuration in detail. In order to understand the distribution of electrons in an atom, we should know the following facts. An orbital like s, px, py, pz, and dxy can have the maximum of 2 electrons. The maximum number of electrons can be accommodated in a shell or orbit. Principal quantum number is given by 2n square. So in this diagram you can see एक ऑर्बिटल के अंदर हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं. 1s के अंदर सिर्फ 2 आएंगे, 2s के अंदर जो रिमेनिंग आ जाएगा वो. सो हम एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुट नहीं कर सकते. Here are some rules for the electronic distribution. These are Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule. In the coming slides, we will see them in detail. So first discuss N plus L rule. It states that the subshells are arranged in the increasing order of N plus L values, and if any two subshells have the same N plus L values, then the subshell is placed first whose N value is smaller. सबशेल्स को जब हम अरेंज करते हैं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यूज के थ्रू कर रहे होते हैं. n और l वैल्यू एक पर्टिकुलर सबशेल की ऐड करके उसके अकॉर्डिंग हम सबशेल्स को अरेंज करते हैं. और अगर किसी सबशेल या अगर किसी दो सबशेल्स की जो वैल्यू है वो सेम आती है, फिर हम उस सबशेल को पहले प्लेस करते हैं जिसकी n वैल्यू छोटी होती है. द अरेंजमेंट इज एज फॉलोज: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d and so on. इसके लिए एक निमोनिक भी है: स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिविजन पब्लिक स्कूल. Next we have the Aufbau principle. It is stated as the electrons should be filled in energy subshells in order of increasing energy values. The electrons are placed first in the 1s, 2s, 2p and then so on. यानी कि according to n plus l value arrangement. So in this diagram you can see subshells are arranged in increasing order of energy level, or we can say in order of n plus l value. So सबसे पहले हम 1s में प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, then 2s में, then 2p, then 3s, then 3p, फिर 4s, then 3d, फिर 4p, 5s and so on. The next rule is Pauli's exclusion principle, that is stated as: it is impossible for two electrons residing in the same orbital of Pauli electron atom to have the same values of 4 quantum numbers, or two electrons in the same orbital should have opposite spin. So in this diagram you can see कि एक ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ हम नहीं प्लेस करते. ऑपोजिट स्पिन के साथ अलाउड है, विद सेम स्पिन नॉट अलाउड. सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ऑक्सीजन में जो आउटर मोस्ट में आएगा 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए विद ऑपोजिट स्पिन, 2s में इलेक्ट्रॉन्स आए विद ऑपोजिट स्पिन, देन 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. दो इलेक्ट्रॉन्स हमने एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट किए विद ऑपोजिट स्पिन, देन वी हैव टू सेपरेट ऑर्बिटल्स. तो हमने उसको एक एक ऑर्बिटल में सेपरेट प्लेस कर दिया. इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इन द हुंड्स रूल. ठीक है. नेक्स्ट इज हुंड्स रूल दैट स्टेट्स if degenerate orbitals are available and more than one electrons are to be placed in them, they should be placed in separate orbitals with the same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spins. Let's see this statement in examples. Here is the pictorial representation जिसमें अगर आपके पास orbitals available हैं
तो आप इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ सेपरेट ऑर्बिटल्स में रखेंगे, ना कि उन्हें एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ प्लेस कर देंगे। यहाँ पे वी हैव 3 ऑर्बिटल्स और 4 इलेक्ट्रॉन थे, दैट्स व्हाई हमने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे विद ऑपोजिट स्पिन और बाकी 2 को हमने सेम स्पिन के साथ ही 2 सेपरेट ऑर्बिटल्स में प्लेस किया। आप इनको डाउनवर्ड स्पिन के साथ भी प्लेस कर सकते हैं और अपवर्ड स्पिन के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। Here we have the summary of all the rules. Aufbau principle was stating कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल्स प्लेस करना है, ठीक है, जो कि ऑर्डर था 1s 2s देन 2p देन 3s देन 3p, इस तरह से। और पॉलिस ने कहा था कि अगर एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रहे हैं तो उनकी स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल टू हैव सेम स्पिन, उनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। और हुंस ने कहा था कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे तो आप उन्हें सेम स्पिन के साथ करेंगे और सेपरेट ऑर्बिटल्स में करेंगे अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। तो बजाय इसके कि आप एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करें, आप सेपरेट ऑर्बिटल्स में एक एक प्लेस करके उन्हें सेम स्पिन के साथ प्लेस करेंगे, आइदर अपवर्ड स्पिन और डाउनवर्ड स्पिन। Here we have a practice MCQ. 2 electrons in the same orbital should have opposite spin according to Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule, none of these. And the correct option is Pauli's exclusion principle. So this was all about electronic configuration. I hope you have understood it well, and thank you so much.